हेलो स्टूडेंट्स, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही आसान होगी। इसी बात के साथ आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन is have two types of protein. It means leguminous plants have also two types of protein. What is symbiotic nitrogen fiction? As we talked about our previous video, symbiotic is the relationship between the host and bacteria, and when these bacteria help to convert nitrogen into their compound, these processes are called symbiotic nitrogen fixation. The main two proteins are like hemoglobin and second is nodule protein. Like hemoglobin, a mature nodule formation. After a mature nodule formation, having pink color pigment that we call the like hemoglobin protein. Nodule have a pink color pigment that we call the like hemoglobin protein. It is the main function of like hemoglobin protein. Absorb the oxygen. Nitrogen fixation, the main nitrogen fixation enzyme is nitrogenase. When nitrogenase enzyme, when the presence of oxygen, nitrogenase enzyme is inactive. Nitrogenase enzyme is do not any work when the presence of oxygen. So, black hemoglobin protein absorb the oxygen and nitrogen fixation is it can be easily with the bacteria because जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय जो प्रमुख एंजाइम है वो नाइट्रोजनेज है और नाइट्रोजनेज एंजाइम कब इनएक्टिव रहेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है इट मीन्स वहां पर यदि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम अच्छे से वर्क कर सकता है। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का जो मेन फंक्शन है दैट इज द मेन फंक्शन इज doing by like hemoglobin protein. Next, we talk about the nodule protein. Presence of several forms: nodule structure, nitrogen metabolism, or carbohydrate metabolism. These three types nodule proteins are present in nitrogen fixation. Generally, we talk about symbiotic relationship, a host or a bacteria. When a host includes its node gene and bacteria have three genes, node, nif and fix gene. When these are compounds that now easily function bacteria for nitrogen fixation. Host presence of node gene यानी host का node gene और bacteria के node, nif और fix gene जब ये दोनों मिलते हैं तो symbiotic nitrogen fixation easily work होता है। नोड जो होता है उसका क्या मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ नोड इज नोड्यूल फॉर्मेशन एंड निफ एंड फिक्स जीन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नोड इज फंक्शन ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन एंड निफ एंड फिक्स जीन इज इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाउ वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ symbiotic नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी प्रोसेस मैकेनिज्म, किस तरह से symbiotic नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है. मैकेनिज्म ऑफ symbiotic नाइट्रोजन फिक्सेशन. फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स इन रूट पार्ट. एज वी टॉक अबाउट आवर प्रीवियस वीडियो, नोड्यूल्स हैव टू इंपॉर्टेंट थिंग्स like hemoglobin protein and second thing is nitrogenase enzyme. Like hemoglobin protein, its main work is absorb oxygen. After this, nitrogenase enzyme is controlled by the nif gene of rhizobia. यानी नाइट्रोजनस एंजाइम जो होता है उसको कंट्रोल करने का वर्क कौन कर रहा है, निफ जीन कर रहा है. किसका निफ जीन है, राइजोबियम यानी बैक्टीरिया का, जैसे हमने यहाँ पर बात करी है. अब नाइट्रोजनस एंजाइम इज कंटेन हैव three main elements as protein,
molybdenum and ferrous। तीन जो होते हैं मेन एलिमेंट से मिलकर के नाइट्रोजन एंजाइम बना है, जिसमें फर्स्ट क्या है, प्रोटीन है, सेकेंड molybdenum है, एंड थर्ड इज आयरन। What is the main reaction of this process? Nitrogen जो है react with ATP 16 ATP adenosine triphosphate in the presence of nitrogenase enzyme, and nitrogenase enzyme will be helped to convert nitrogen into ammonia, and ATP convert to the formation release energy of ADP, adenosine diphosphate, and 16 pi. Pi is a inorganic phosphate. Again, I repeat it. Nitrogen react with hydrogen and electrons release plus 16 ATP molecules. 16 ATP molecules in the presence of nitrogenous enzyme. Right? Nitrogenous enzyme convert nitrogen into ammonia and release the energy for ADP, 16 ADP and 16 pi. It means inorganic phosphate. Now, this ammonia is used for amino acids. यानी इस अमोनिया का यूज अमीनो एसिड्स के रूप में किया जाता है। फर्स्ट, अमोनिया इज रिएक्ट विद keto-glutaric acid and formation of glutaric acid. After this, glutaric acid is converted amino acids. These amino acids are used for so many things. यानी अमोनिया जो है उसका उपयोग अमीनो एसिड्स के रूप में किया जाता है। तो today we talk about the symbiotic nitrogen fixation and their importance, protein, and also we talk about the mechanism of symbiotic nitrogen fixation. So, regular study at your home. Be safe. Stay at home. Thank you. Have a nice day.